Before going into the intricate details of basic structure of the present indefinite tense, we must know that there are mainly four forms or four aspects or four types of sentences. These are affirmative, negative, interrogative, and negative interrogative. Now look at this structure. Before going into the basic structure, we should know that every sentence can be modified into four different aspects or four different directions. First one is affirmative, which is a simple sentence, just like he writes a letter. The second one is the negative sentence, which means, which is used as he does not write a letter. Similarly, the interrogative form, the same sentence can be converted into interrogative by putting the helping verb in front of that sentence. Does he write a letter? And the fourth option is that negative interrogative, means does he not write a letter? Now let's check them. Before going into the intricate detail, we should learn that the verb used in present indefinite tense is always the present form of verb, which is also called the infinite form or infinitive verb. And the helping verbs used in this tense will always be do or does, according to the subject of the sentence. Now look at the basic structure of a affirmative sentence. In this sentence, we first begin the sentence with subject, then by putting the present form of verb, by adding s or es according to the verb condition, and at the last, object or the modifier. Modifier can be an adjective, can be some verb phrase or predicate. This is the basic structure of affirmative sentence. Same wise, when we convert this sentence into negative sentence, we will have to use the helping verbs do or does. And after using the helping verb, which is appropriate according to the subject, we will add the word not. After that, we will use the present form of verb without adding an s or es at the end. Likewise, an interrogative sentence is always made by putting helping verb do or does at the beginning of the sentence before the subject. After that, we use the main verb, which is always the present form, without an addition of s or es, just because we have put the helping verb at the beginning. After that, we will use the object at the end or the modifier and the sign of interrogation. After that, the fourth form of the same affirmative sentence is negative interrogative. In this sentence structure, we will always put the helping verb at the beginning. After that, we will put the subject and add the word not after the subject, and then we will use the present form of a verb without the addition of s or es, and lastly the object or the modifier and the sign of interrogation. These are the basic structures of an affirmative sentence in present indefinite tense. अब हम उर्दू में इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि इस टेंस या इस ज़माने के जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा होती है हमारे पास प्रेजेंट। जहाँ भी आपको प्रेजेंट दिखाई दे तो वो वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म होती है, यानी पहली हालत जिसको हम बोलते हैं। इसमें जो HV है, ये एब्रीविएशन हम यूज़ करेंगे फॉर हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स इसमें मेनली यूज़ होते हैं डू और डज। सेम वाइज एक सेंटेंस जो है, एक जुमला, वो चार अक़साम रखता है। एक मुस्बत या इस्तिफ़हामिया जुमला, उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा बनता है नेगेटिव, मनफी जुमला, यानी जिसमें किसी बात की मनाही या नफ़ी की गई हो या की जाती हो। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास इंट्रागेटिव सेंटेंस, यानी उसी फ़िक्रे को जब हम सवालिया फ़िक्रे में बदलते हैं या उसी सादा फ़िक्रे से हम सवाल बनाते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। उसके आखिर में नेगेटिव इंट्रागेटिव, यानी मनफी सवालिया जुमला। सपोज हम मिसाल लेते हैं कि अली पानी पीता है,
ठीक है। अली ड्रिंक्स वाटर, अली ड्रिंक्स वाटर। अब अली सब्जेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट वर्ब है हमारे पास ड्रिंक, चूंकि अली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो हम उसके साथ एस का इजाफा करेंगे। अली ड्रिंक्स वाटर। जरा स्ट्रक्चर को देखिए, अली ड्रिंक्स वाटर। अब इसी फिक्रे को अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे अली, हेल्पिंग वर्ब की जगह चूंकि हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है अली है, इसलिए हम डज यूज करेंगे, उसके बाद वही नॉट आ जाएगा। उसके सब्जेक्ट की जगह अली, हेल्पिंग वर्ब की जगह डज, नॉट आ जाएगा। प्रेजेंट फॉर्म विदाउट द एडिशन ऑफ एस हम ड्रिंक यूज करेंगे, और आखिर में क्या हमारे पास आएगा, वाटर। फिक्रा क्या बना, अली पानी नहीं पीता या नहीं पीता है, अली डज नॉट ड्रिंक वाटर। इसी फिक्रे को, अफर्मेटिव को अब अगर हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब चूंकि स्टार्ट में है तो डज आएगा, सब्जेक्ट हमारा अली साहब है, डज अली, और उसके बाद वर्ब हम यूज करेंगे ड्रिंक, उसके साथ हम एस का इजाफा नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास डज में आ चुका है। डज अली ड्रिंक वाटर, क्या अली पानी पीता है। और इसी अफर्मेटिव को अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम स्ट्रक्चर ये वाला यूज करेंगे, डज अली नॉट ड्रिंक वाटर, और साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। डज अली नॉट ड्रिंक वाटर, क्या अली पानी नहीं पीता। ये है बेसिक स्ट्रक्चर हमारे एक सादा से जुमले का, डायमेंशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं।